हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डॉक्टर एग्री बिजनेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सवालों की, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट से जुड़े कुछ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट अकाउंटिंग प्रोसीजर? कंसिस्टेंट अकाउंटिंग प्रोसीजर एंड लॉजिकल बैच के आधार पर कलेक्शन ऑफ डेटा को क्या बोलते हैं? Options are financial management, financial statement, and financial budget. What are your answer? So the answer will be B. Financial statements are the organized collection of data according to logical and consistent accounting procedures. Next question is, what do you understand about financial statement? अगर हम उसका दूसरे तरीके से सवाल पूछें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, तो उसके बारे में आप क्या समझते हैं? तो ऑप्शंस आर अ ग्रुप ऑफ रिपोर्ट्स regarding the organization's various financial aspects, a group of reports regarding employees' data, a collection of reports pertaining to organization's vision and mission. The answer will be option A group of reports regarding the organization's various financial aspects. Next question is, the term financial statement cover. Financial statements क्या cover करता है? Profit and loss statement, balance sheet and profit and loss statement, preparation account, balance sheet and profit and loss statement, and none of these. The answer will be C. बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कवर किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट जो है आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? इसमें से कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है? द ऑप्शन इज इनकम स्टेटमेंट, कंपनीज विजन, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो ऑफ द फर्म। तो सारे इसके स्टेटमेंट हैं, और केस कंपनीज विजन जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड द वाइटल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसके रिगार्डिंग हमको जानकारी प्रोवाइड करते हैं? फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फर्म, लिक्विडिटी ऑफ फर्म, सोल्वेंसी ऑफ द फर्म। द आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है वो आपको लिक्विडिटी एंड सोल्वेंसी ऑफ द फर्म बताता है, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म बताता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? Options are financial statements are also known as annual records. Option B, financial statements are historic and recorded facts. Option C, financial statements gives a summary of accounts. And option D, all of these. The option which is correct is D. फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में जो है तीनों बातें सही है। विच रिपोर्ट्स गिव्स अ रिव्यू ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फर्म्स? फर्म्स के प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में कौन बताता है? इनकम स्टेटमेंट बताता है। द आंसर विल बी सी। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज आल्सो नोन एज पी एंड एल स्टेटमेंट जो होता है उसका दूसरा नाम क्या है? तो स्टेटमेंट ऑफ इनकम उसको बोलते हैं, या इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ऑप्शन डी विल बी राइट। स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग नहीं बोलेंगे, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट नहीं बोलेंगे, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशंस नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो उसको बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ इनकम या इनकम स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बैलेंस शीट शोज, बैलेंस शीट क्या शो करता है? ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल पीरियड, नेट प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल पीरियड, फाइनेंशियल पोजीशन ऑन ए पर्टिकुलर डेट, और ऑल रियल पर्सनल नॉमिनल अकाउंट्स। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। फाइनेंशियल पोजीशन ऑन अ पर्टिकुलर डेट बैलेंस शीट बताता है। बैलेंस शीट इज आल्सो नोन एज, बैलेंस शीट का दूसरा नाम क्या है? द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंस, स्टेटमेंट ऑपरेशन पोजीशन। तो हम जानते हैं कि बैलेंस शीट जो है फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, इसलिए इसको हम बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, statement of financial position gives the information about, statement of financial position means balance sheet gives the information about assets and liability, income, expenses and credits. तो हम जानते हैं बैलेंस शीट indicates about the assets, liabilities and equity. The answer will be option A. Which of the following are the component of balance sheet?
बैलेंस शीट के कंपोनेंट क्या है? हमने जाना था कि बैलेंस शीट कंपोनेंट होता है एसेट, लायबिलिटी और इक्विटी, मींस ऑल ऑफ दीज आर द कंपोनेंट ऑफ बैलेंस शीट, इनसे मिलकर बैलेंस शीट बनता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ बैलेंस शीट? इनमें से कौन सा बैलेंस शीट का कंपोनेंट नहीं है? अगर तीन है तो चौथा नहीं है, मींस इनकम और रेवेन्यू जो है नॉट द कंपोनेंट ऑफ बैलेंस शीट। ऑल आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूम्ड और कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ। उसको हम क्या बोलते हैं? जिनको हम 12 मंथ के अंतर्गत कैश और कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते या कंज्यूम नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं? नॉन करंट असेट्स। दो तरह के असेट्स होते हैं, करंट और नॉन करंट। जिनको हम विद इन 12 मंथ अगर कन्वर्ट करवा लें कैश में या कैश के इक्विवेलेंट, तो उसको हम बोलते हैं करंट असेट्स। और जिसको नहीं करा सकते कन्वर्ट, उसको बोलते हैं नॉन करंट असेट्स या फिक्स्ड असेट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड assets of the firms? So land, farm building, plant and equipment, and all of these are the correct answer, as we cannot able to convert these assets into the cash. Assets are shown in the balance sheet as, assets को balance sheet में किस रूप में दिखाया जाता है? इक्विटी के रूप में। The correct answer will be B. Liabilities are shown in the balance sheet as expenses. Liabilities को expenses के रूप में दिखाते हैं। The amount of money that a company owes to its creditor is called liabilities. Which one of the following are the example of long-term liabilities of firms? Mortgage on buildings or short loans, long-term loans, all of these are the long-term liabilities of a firm. Accounts payable, inventory purchase or draft are the example of current liabilities. Option B will be right. Current liabilities क्या होती है? ऐसी liabilities जिनको within 12 month हमको paid out करना होता है, देना होता है। A firm buys product but does not pay to suppliers instantly. This is known as the accounts payable. किसी फर्म ने प्रोडक्ट खरीदा लेकिन उसको तुरंत पैसा नहीं दिया, मतलब पैसा बाद में देंगे, तो अकाउंट्स पेबल में ये काउंट होता है, उसको अकाउंट पेबल बोलते हैं। तो व्हाट डज अ बैलेंस शीट इंडिकेट आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस? निम्नलिखित जो ऑप्शन है उनमें से बैलेंस शीट किसको इंडिकेट करता है? बैलेंस शीट के बारे में हम जान चुके हैं, तो बैलेंस शीट इंडिकेट करता है असेट्स, लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी ऑफ द फर्म। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। Next question, in balance sheet, total value of assets should be able to match the worth of the, बैलेंस शीट में जो असेट्स का वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होना चाहिए? वो लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी के इक्वल होना चाहिए। टोटल सम ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज इज द करेक्ट आंसर। दैट्स व्हाई वी कॉल इट बैलेंस शीट। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज मोस्ट सुटेबल अबाउट द बैलेंस शीट? इसमें बैलेंस शीट को कौन शूट करता है? बैलेंस शीट के लिए कौन सा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है? assets equals to shareholders equity plus liability, we just discussed in above questions. When assets are subtracted from liabilities, it will be equal to capital या shareholders net worth या owners equity. Owners next question is current assets are also known as, हम उनको current assets क्या बोलते हैं? Working assets बोलते हैं, ठीक है? The main operation expenses of a business are termed as operating expenses. The term current assets does not cover, ट्रैक्टर जो है वो करंट असेट्स नहीं है। बाकी सब इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में डेटर्स हो गए, स्टॉक ऑफ प्रोड्यूस हो गए, प्रीपेड एक्सपेंसेस और द करंट असेट्स ऑफ द फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए करंट असेट्स दैट कैन बी ट्रांसफर इनटू कैश विद इन 3 मंथ इज नोन एज, जो 3 महीने के अंतर्गत उसको कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं। इन बैलेंस शीट, एक्रूअल्स, नोट्स पेबल एंड अकाउंट्स पेबल आर लिस्टेड अंडर करंट लायबिलिटीज। Inventories, cash and cash equivalents, accounts receivables are listed as assets on the balance sheet. These are the assets on the balance sheet. Which ratio reflects liquidity position of firm within 1 year time? So the answer will be current ratio. Current ratio reflects the liquidity position of a firms to fulfill out the current needs of the business.
Which ratio reflects liquidity position of firm business over intermediate time period? Intermediate time period, that is 2 to 5 years का जो liquidity position बताता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं working ratio. Which ratio indicates the firm's immediate financial obligation against the net worth? Current liability ratio is the correct answer, and option A is correct. This ratio represents the capacity of farmers to meet out the long-term obligations या commitments. Current ratio, net capital ratio, working ratio, debt equity ratio. Option is debt equity ratio. Which ratio measures the overall solvency position of farmers or borrowers and indicated long-term liquidity position of the business? Net capital ratio shows the overall solvency position of business or a borrower. Which ratio tells about the magnitude of working expenditure incurred to derive a rupee of gross income? Which ratio tells about the magnitude of working expenditure incurred to derive a rupee of gross income? The ratio is known as operating ratio. Option A is correct. Next question is which ratio tells about the magnitude of expenditure incurred to realize a rupee of gross income? So option will be input output ratio. Next question is which ratio tells about the gross returns earned for a rupee of average capital invested over all the years? Capital turnover ratio tells about the gross return earned for a rupee of average capital invested over the year. Which ratio tells about the magnitude of fixed expenditure incurred to derive a rupee of gross income? Fixed ratio. Option C is correct. Which statement shows the flow of cash and cash equivalents during financial period? Statement of change in equity, cash flow statement, balance sheet, income statement. Cash flow statement shows the flow of cash and cash equivalents during a financial period. Which of the following option is the most suitable for explaining the purpose of an income statement? Profitability. ठीक है. And which of the following is not a current assets? इनमें से कौन सा current assets नहीं है? Land and buildings is not the current assets of firm. Which of the following activities can be called as crucial part of cash flow statement? Following activities are the crucial part of cash flow statement: operating activities, financing activities, and investing activities. Option D is the correct answer. So we are discussing about the financial statement in this video, and we have discussed so many questions regarding financial statement, especially balance sheet and income statement, as these two financial statement are the part of your syllabus. Thank you guys for being with us. Thank you for watching, and if a video is useful for you, please share with your friends and stay with the Dr. Agribusiness. Thank you guys. Thank you so much.